So hi guys, welcome to the next lecture in which we'll be studying about the private defenses which are left right now. Uh, they'll include judicial acts, the prospect of accident, absence of criminal acts, consent, and trifle acts. Right, so let's straight away go to judicial acts. Judicial acts are written under section 15 and 16 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. Right, under section 15, a judge is protected in cases in which he proceeds irregularity in the exercise of power which the law gives him. So it is in respect to judges, they are protected in different cases, in cases right, in which he proceeds irregularity in the proceeds of law, in the proceeds of law. Okay, so that is one thing. Apart from that, let's see what is written in section 16. It is a corollary to section 50. It affords protection to officers acting under the authority of judgment. Right? And or order of the code of law. Section 16 differs from section 15 on the issue of jurisdiction. Right? What I'll do right now, I'll help you guys decipher through the sections as well in between. For example, we have to read through section 15 of the Act. Act of judge when acting judicially. Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by the law. ठीक है, अगर जज को by the law अथॉरिटी मिली है तो सीन तो यही होना था. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना. नेक्स्ट सेक्शन 16. Act done pursuant to the judgment of the order of court. Nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court, if done whilst such judgment or order remains in force, is an offense, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act is in good faith believes that the court has such jurisdiction. इसका कमेंट क्या था बिल में, जो बीएनएस का बिल आया था? इट सीक्स टू exempt a person from an offense when acting under the judgment or order. ठीक है, कोई ऑफिसर अगर किसी जजमेंट के अंदर अपना काम कर रहा है, ठीक है, किसी जजमेंट से उसको अथॉरिटी मिली हुई है वो काम करने के लिए, सो दैट विल नॉट बी an act pursuant under the BNS, a criminal act pursuant under the BNS. That is what this section is trying to say. The difference between both of these sections is the prospect of jurisdiction, right? इसमें कमेंट्स में ये भी लिखा है फिर नॉट विथस्टैंडिंग दैट द कोर्ट हैड नो जुरिस्डिक्शन टू पास एनी सच जजमेंट और ऑर्डर प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स दैट द कोर्ट हैड सच जुरिस्डिक्शन. इस बात का हमें ध्यान रखना. राइट, नेक्स्ट. This was section 15 and 16. Now we'll go to the prospect of accident as well. Before that, we have to read one case in respect to judicial acts, which is no. Yeah. Bhagwan Tukaram Dange versus State of Maharashtra. This is in respect to section 23 and 24. So we can ignore this. We have already read question 20, section 23 and 24 in respect to intoxication. Right. So we have to, we don't have to include that. Right. Next. Sorry. Yeah. Next we have section. We already have read. Just a second. Yeah.
We went through section 15 and 16. Now we'll go to section 18, which is accident. Right? यहाँ लिखता हूँ मैं section 18 accident के बारे में. Section 18 is in respect to accident under defenses. Right. To claim the benefit under section 18, following three ingredients are important. One, two, three. Right? Must be satisfied. The act in question must be without any criminal intention or knowledge. So the act should be without criminal intention and knowledge. Criminal intention plus knowledge. ठीक है. The act was being done in a lawful manner. Act was being done in a lawful manner. ठीक है. उसके बाद that was done with proper care and caution. Act was with proper care and caution. Those are the important things which we have to take a note of. In Shankar Narayan Bhatolkar versus State of Maharashtra. Let's go through this case. Shankar Narayan Bhatolkar versus State of Maharashtra. State of MH. Right. Where the act of the accused is likely itself of criminal nature, the protection under section 18 cannot be availed. If the act is of criminal nature, right, then if the act is of criminal nature, then the protection under section 18 की protection can't be availed. Right. That is one thing. इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए. लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर में होना चाहिए, इंटेंशन नहीं होनी चाहिए और नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि वो क्रिमिनल एक्ट है. इस बात का हमें ध्यान रखना है. राइट. नेक्स्ट we'll go to the next section, which is absence of criminal acts. Now, under section 19 or 24, I think मुझे इसको चार्जिंग पे लगा लेना चाहिए. Just a second, guys. So, hi. I hope I'm audible again. I think I am. Yes. So, absence of criminal acts. It is in the section, it is from section 19 to 24. Section 19 states that act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. ठीक है. देखिए, act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. Nothing is an offense merely by the reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm. If it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person. ठीक है. देखिए, इसका एक मैं ना आपको समझाता हूँ थ्रू इलिस्ट्रेशन. हाँ.
A, in a great fire, pulls down, just a second, guys. Yeah. Just a second, guys. Yeah. So A, in a great fire, pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention in good faith of saving human life or property. Here, if it be bound that harm to be prevented was such nature and so imminent as to excuse his A act, A is not guilty of the offense. अब मैं आपको सरल भाषा में एक एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम आदित्य है, सामने नीरज पेप्सू का घर है. नीरज पेप्सू के घर में लग गई है आग. अब मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं नीरज पेप्सू के घर में जाऊं और उसके घर में जितने भी लोग हैं उन्हें बचाने की कोशिश करूं. ह्यूमन नेचर का पार्ट है. फिर इस चीज को करने के लिए अगर करते करते फॉर एग्जाम्पल किसी को धक्का लग गया जाते जाते, ठीक है, उस धक्के की वजह से वो गिर गया और उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तब मेरा जो क्रिमिनल एक्ट है वो जो एक्ट है वो क्रिमिनल इन नेचर नहीं है क्योंकि उसमें मेंसरिया नहीं था. ठीक है. यहीं पे ही जो एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल एक्ट का प्रोस्पेक्ट है वो क्रिएट हो जाता है. दैट इज द एक्सप्लेनेशन है. रिमेंबर दैट. दैट इज वन थिंग. इसके केसेस हैं. वीन वर्सेस डडले. ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस था दोस्तों. मैं यहाँ लिख देता हूँ. Yeah. वीन वर्सेस डडले. राइट. इसमें चार लोग थे. टॉम डडले, एक क्या कहते हैं, शिप थी, शायद से शिप थी. टॉम डडले था, एडविन स्टीफंस था, एडमंड ब्रुक्स था और रिचर्ड पार्कर था जो था कैबिन बॉय. 3 + 1, जो 17 साल का लड़का था वो प्लस कैबिन बॉय था एक. वो मतलब एक केबिन बॉय था, 17 साल का लड़का. ठीक है. तो क्या हुआ यार, आ, वो फंस गए शिप में और इन चारों के चार लोग थे टोटल. अपने डिसाइड किया कि किसी को मारना पड़ेगा ताकि खाने वाने का पूरा काम सही हो जाए. ठीक है. तो यहाँ पे निकली डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी. कौन सी डॉक्ट्राइन? डॉक्ट्राइन ऑफ व्हाट? नेसेसिटी. नेसेसिटी. ठीक है. इसके 3 टेस्ट निकले कि कब किसी को मारना सही ठहराया जा सकता है. देयर मस्ट बी सिचुएशन इन विच द अक्यूज्ड इज कन्फ्रंटेड विद ग्रेव डेंजर. ग्रेव डेंजर हो. ठीक है. ही हैज नो चॉइस बट टू कमिट द लेसर हार्म इन ऑर्डर टू अवॉइड ग्रेटर हार्म. लेसर हार्म करना ही पड़ेगा टू अवॉइड. अवॉइड व्हाट? ग्रेटर हार्म. रिमेंबर दैट. प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर. वही है उस प्रिंसिपल का एलोंगेटेड वर्जन. Third, the situation which the accused is in should be self-inflicted due to his own fault or negligence. Self-inflicted situation. ठीक है. ये 3 चीजें बहुत जरूरी है. ठीक है. इस केस में फिर क्या निकला? The accused were convicted of murder and the defense of necessity was not allowed. They were sentenced to death, but the crown com- uh, converted the same to 6 months imprisonment. Lord Coleridge famously observed that necessity cannot be defense of murder and it is alien to criminal jurisprudence. ठीक है. इस बात का ध्यान रखना क्योंकि यार प्रिवी काउंसिल का अगर कुछ भी जजमेंट आ रही होती थी तो वो एक समय के बाद क्राउन के पास जाती थी अपील में.
इनमें तो यार नेशनल गार्ड्स होते हैं, उन सब के ऊपर हार्म तो नहीं पहुंचना चाहिए, ये लोग कहते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये वाला जो पूरा प्रोस्पेक्ट था ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को, उसको डिफेंस ऑफ मर्डर बोला ही नहीं। यहाँ जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का एक लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल लिबरिज्म था वो दिखाई देता है। तो अब यही है, अभी हो गया था तो बहुत पुरानी बात है। दिस द केस वाज ऑफ 1884। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सेक्शन 22। आई थिंक मैंने सेक्शन 22 आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, विच वाज इन रिस्पेक्ट टू द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो मैडमैन वाला जो एग्जाम्पल था 22। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया है, तो उसके रिलेशन में ही आ जाता है। कंसेंट का प्रोस्पेक्ट 25 to 28 में है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा 25 to 28। गिव मी अ सेकेंड। Right, in section 25 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। ठीक है, अब हम कंसेंट पे आते हैं। ठीक है, कंसेंट विल बी अंडर सेक्शन 25। Act not intended and not known to be likely cause death or grievous hurt done by consent। Not known to be likely to cause death, not 25 + 28। ठीक है, इसमें वही है, माइनस इंटेंशन एंड माइनस नॉलेज। राइट, से डेथ होगी। ठीक है, तो वो एक डिफेंस माना जाएगा। ठीक है, इसका इलिस्ट्रेशन पहले पढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक I was working with a friend. He worked under Ram Jethmalani, and Ram Jethmalani ji said to him that in criminal law it is very important to read illustration first, then go to the section. Right? So sometimes we will never be able to get the context of what the criminal law is trying to say to us. So just to remove that possibility, if we go through the illustration beforehand, it will help us a lot to understand and gather the information of what the law is trying to say to us. So A and Z agree to fence with each other amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm in the course of such fencing may be caused without foul play, and if A, while playing fairly, hurt Z, A commits no offense. Easy? हार्म हो सकता है, कंसेंचुअल हार्म हो रहा है। अब उसमें कुछ ज्यादा बड़ा हार्म हो गया, जैसे कभी कोई स्काई डाइविंग करने जा रहा है तो उससे कंसेंट फॉर्म भरवाते हैं ना, वो यही है, वो यही सेक्शन की वजह से भरवा रहे हैं। ठीक है, कि हार्म है, हार्म ना हो हम चाहते हैं, अगर हो गया तो ये सेक्शन, दिस सेक्शन विल कम इनटू प्ले। दैट इज द सीन। राइट, नेक्स्ट, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। नहीं नहीं, कंसेंट गुड फेथ नहीं, वी हैव टू रीड 28 फर्स्ट। राइट, 28, 28 इज इंपॉर्टेंट। कंसेंट माइनस है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं। फियर ऑफ इंजरी, फियर ऑफ इंजरी, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट।
unsound mind, insane, idiot, lunatic. Lunatic. Child under the age of 12, then intoxication. इंटॉक्सिकेशन का प्रोस्पेक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये जो पांच चीजें हैं ना, ये सेक्शन 28 का एसेंस क्रिएट करती है। सेक्शन 28, काफी गंदी राइटिंग आ जाती है मेरी। बेटर। Section 28 of BNS, instead of giving a positive definition to the word consent, defines it in a very negative term. It states what is not considered consent in law. Consent, in order to secure the benefit of exemptions from criminal liability, must be a free consent. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। केस था इस सेक्शन 28 के लिए, उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, where a girl was of 19 years of age and had sufficient intelligence to understand the significance of moral quality of the act she was consenting to. She was conscious of the fact that her marriage was difficult on account of caste consideration. There was no evidence to prove conclusively that the man never intended to marry her. On the basis of the above facts, court held that it did not feel persuaded to hold that consent was obtained by misconception of facts and was a part of uh, the victim. ये एक वाइडर एम्बिट क्रिएट कर दिया इन रिस्पेक्ट टू सेक्शन 28 इन दिस केस। ठीक है, राइट। सेक्शन 25 मैंने आपको बता दिया, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। ठीक है, ठीक है। सेक्शन 25 में एक बात का ध्यान रखना है, देयर इज अ डूअर, डूअर एंड अ विक्टिम। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। This section protects a person who causes injury to another person above 18 years of age who has given his consent by doing an act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt. It appears to proceed upon the uh, maxim of VNFI, which is voluntary non-fit injury, right? And that rule is based on two basic principles, which is every person is the best judge. Person is the best judge of his own interest. And secondly, no man will consent to what he thinks hurtful for himself. No man will consent himself to what seems hurtful. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। Yeah, that is it for section 25 and 28. आई थिंक इसके बाद ट्राइफल एक्ट्स बच रहा है। मैं आपको ट्राइफल एक्ट्स के भी थोड़े से प्रोस्पेक्ट्स बता देता हूँ। ट्राइफल एक्ट्स पूछा नहीं जाएगा वैसे, कहीं सच बताऊं तो सेक्शन 38 में है, फिर भी आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। When the right of private defense of body extends to causing death, the right of private defense of the body extend under the restrictions specified under section 37, right? कहाँ कहाँ पे नहीं है
क्या कहते हैं, दिस थिंग, प्राइवेट डिफेंस. Such an assault as may reasonably cause by apprehension death. मतलब देखिए, जो हाई लेवल के ऑफेंसेस हैं, चलिए आप मुझे कमेंट में ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. उसके बाद अगर आप ये सेक्शन पढ़ेंगे, उनको समझने के बाद, तो आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ आ जाएगा, सेक्शन 38 का. इसमें बेसिकली जो हार्श लेवल के ऑफेंसेस है, उसमें जो प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं. ठीक है, वो कितने लगते हैं, कब तक लगते हैं, वो आपको इसके थ्रू पता लग जाएगी. सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड गाइस. आई होप you like the video. If you want to like study section 38 with me telling that on the Noteful application on iPad, I'll do that if you want me to do that. Not a problem at all. But yeah, I think first of all you should read about the things which I've told you right now, and then we'll continue with it. So till then, study hard, and I'll see you in the next class. Bye bye.